Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your S.St teacher. In the last in the last video we have discussed about the flowering of regional cultures, and in this chapter we discuss some two important topics, that is growth of regional languages and literature. And in this some 2 points first point, that is growth of regional languages and literature in the north AD 800 to 1200. Okay, so let's start our new topic, that is growth of regional languages and literature in the south AD 800 to 1200. Okay, and one more topic, growth of regional languages and literature during the Sultanate period 1216 to 1526 AD. Okay, these are the two topics which we are going to discuss today. So let's open your book, page number 76. Yes, growth of regional languages and literature in the south AD 800 to 1200. In the south, this period means from 800 to 1200 AD saw much growth in regional languages and literature. During this period, there took place a lot of growth in the field of regional languages and literature. Sanskrit and Tamil became the chief media of expression, and they used to two languages for expressing their views, especially Tamil and Sanskrit. Okay, मीन्स वे लोग दो लैंग्वेजेस का यूज करते थे अपने भावों को, अपनी बातों को प्रकट करने के लिए. फर्स्ट क्या था? संस्कृत, और सेकंड क्या है? तमिल. A lot of literature was created in Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam languages, and also they used to create a lot of work or literature in other languages like Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. Many literary and religious works from Sanskrit were translated into these languages, and they became very popular among the people. And what they do? Many literary and religious works, कई सारे जो साहित्यिक हैं और religious वर्क्स हैं फ्रॉम संस्कृत से उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करने के बाद ये लोगों में, आम जनता में, मासेस में पॉपुलर हुआ. द रामायणा ऑफ कंबन इन तमिल इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल. इस तरह का एग्जाम्पल जो है कि उसको ट्रांसलेट किया गया तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में, उसको उन्होंने, और स्पेशली हम जब रामायण की बात करते हैं तब कंबन के द्वारा जो तमिल में इसको ट्रांसलेट किया, ये बहुत ही फेमस हुआ. Telugu writers like Naina and Tikkana immortalized their names by their excellent adaptations of the Mahabharata. इसी तरह से other two writers also got their name and fame in doing their excellent adaptation of Mahabharata. These epics provide valuable information about South Indian history of these and earlier periods. And what happened? These epics, इस epics के द्वारा लोगों को बहुत सारी important information किसके बारे में मिलती गई? South Indian history of this and earlier period. इस period में और earlier period के बारे में कई सारी जानकारी लोगों को मिलती गई. लिंग्यार्ड टीचर्स प्रीच्ड इन कन्नड़. लिंग्यार्ड के जो टीचर्स थे किसमें लोगों को शिक्षा देते थे? इन कन्नड़. पोएट्स लाइक पंपा, पोना एंड राणा contributed towards Kannada literature. These three writers were well famous in
Kannada literature, and also they contributed in this literature. Because of the fine quality of their writings in Kannada language, they are called the three jewels of Kannada literature. ये तीनों लोग अपने राइटिंग की वजह से, जो उनकी जो लिखने की जो शैली थी और फाइन क्वालिटी होने के कारण ये लोग किस नाम से जाने जाते थे? थ्री ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर. One word question may be asked in exam, so underline all these. Okay. In Kerala, the southwestern part of peninsula, the kingdom of Mahadayapuram. When we move towards Kerala in southwestern part of peninsula, a kingdom known as Mahadayapuram was established under the Chera rulers in the 9th century. चेरा किंगडम्स की स्थापना हुई थी कब? 9th century. Malayalam language and script became quite popular here. And what became popular here? What? Malayalam language and script became more and more popular. The first literary works in Malayalam, dated about the 12th century, are directly indebted to Sanskrit. And one of the first literary works which is in Malayalam was also dated from 12th century and are directly indebted. Indebted means bahas karna to Sanskrit. 14th century text, the Leela Tilakam, dealing with grammar and poetics, was composed in the Mani Prabhalavam, a combination of Sanskrit and the regional language. And also what happens, a 14th century text, what contributed here? Leela Tilakam also deal with grammar and poetics. They all composed in which? In the Mani Pravalam, a combination of both Sanskrit and other regional languages. किसका मिलावट था? Sanskrit plus other languages का. Okay, now let's move towards our second topic, that is growth of regional languages and literature during Sultanate period, means 1206 to 1526 AD. With the coming of the Muslims, Persian became the language of the nobility. जब हमारे यहाँ जब मुस्लिम्स का आगमन हुआ तब पर्शियन क्या था? Became the language of nobility. Sanskrit, however, continued to be the language of high learning among the Hindus. ये नहीं कि जब मुस्लिम्स आए तो पर्शियन उनकी लैंग्वेज बन गई, लेकिन ऐसा नहीं था. संस्कृत भी कंटिन्यूएशन में था, जो कि स्पेशली स्पोकन बाय हाई लर्निंग among the especially among the Hindus. The development of bhakti led to the rise of different regional languages. और जो भक्ति मूवमेंट की डेवलपमेंट ने क्या रूप बदला? राइज इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस. इसी समय से कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि आपका हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल. Various books, various Sanskrit books began to be translated into these regional languages. Okay, सारे Sanskrit books also used to translate in their regional languages. This period also saw the rise of Urdu language, and during this period most of people they used to speak Urdu language also because of long contact. Why they used to speak Urdu? Because of the long contact. From whom? Persian and Hindi were mixed to form a simpler language
for both the communities. किसकी मिक्सअप से? बोथ पर्शियन और हिंदी की जो मिक्सअप थी एक सिंपल लैंग्वेज का रूप लेती है। वो कौन सी लैंग्वेज है? दैट इज कम्युनिटीज कौन कौन से थे? द टर्क्स एंड द इंडियंस। दैट इज इट वाज लेटर कॉल्ड एज अ उर्दू। इसको बाद में किस नाम से जाना जाता है? उर्दू। As Persian was the official language of the court, much of the literature during this period was written in this language. As the official language of there is Persian, and they used to, and most of their works also done especially in Persian, and also they used to much of their literature during this period they used to write in Persian language. Celebrated Persian poets like Amir Khusru and Amir Hussain Dalvi wrote superb poetry in Persian. और इस समय के दो इम्पोर्टेंट पर्शियन पोइट्स कौन कौन लोग हैं? आमिर खुसरू और आमिर हुसैन दलवी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री राइट की है। किसमें? दे यूज्ड टू रोट इन पर्शियन। Historians like Minhaj as-Siraj and Jia Barani and travelers like Ibn Battuta recorded accounts of rulers। और ये लोग जो जैसे कि आपके ग्रेट हिस्टोरियंस थे, मिनाज इस-सिराज और जिया बरानी, और जो ट्रैवलर जो यात्री थे कौन? इबान बतूता। उन्होंने ये क्या रिकॉर्ड करते थे? क्या रिकॉर्ड करते थे? अकाउंट्स ऑफ रूलर्स एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स एंड लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल इन देयर लैंग्वेज। वे वहाँ के लोगों के लाइफ के बारे में, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, और जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स होती थी इनको ये अपनी लैंग्वेज में लिखते थे। संस्कृत कंटिन्यूड टू फ्लोराइज अंडर द विजयनगरा रूलर्स। और धीरे धीरे जो संस्कृत लैंग्वेज था धीरे धीरे फैलता गया किसके समय काल में? विजयनगर रूलर्स। रामानुजा, सारथी मिश्रा एंड जयदेवा वेर प्रोमिनेंट संस्कृत ऑथर्स ऑफ दिस पीरियड। और कुछ इम्पॉर्टेंट ऑथर्स भी हुए इस समय काल में, जैसे कि आपके जयदेवा हैं जो कि संस्कृत ऑथर्स हैं, आपके जो रामानुजा हैं, सारथी मिश्रा हैं, ये लोग इम्पॉर्टेंट ऑथर्स हैं इस समय काल के। द दिल्ली सुल्तान्स गॉट मेनी संस्कृत वर्क्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड अरबिक। जो दिल्ली के सुल्तान ने कई सारे वर्क्स, इम्पॉर्टेंट वर्क्स को उन्होंने जो संस्कृत में था उन्होंने अपनी लैंग्वेज कौन कौन सी? पर्शियन और अरेबिक में ट्रांसलेट करवाया। सुपर्ब लिटरेचर वाज प्रोड्यूस्ड इन द रीजनल लैंग्वेज एंड ऑल्सो दे यूज्ड टू प्रोड्यूस सुपर्ब इम्पॉर्टेंट लिटरेचर इन दिस और इन देयर लैंग्वेज। आमिर खुसरू वाज ऑल्सो अ फेमस हिंदी राइटर। आमिर खुसरू एक इम्पॉर्टेंट और फेमस हिंदी राइटर भी थे। So today only this much. In the next video we will discuss about growth of regional languages and literature during Mughal period 1526 to 1707 AD. So today only this much. Thank you.